दुनिया में शादी करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? प्यार। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में ना 2-4 स्टेप्स और होते हैं। लड़की की फैमिली को लड़के से प्यार होना चाहिए। अंकल, अनन्या घर पे मुंह तो ऐसे बना रहे थे जैसे मैं आंटी पे चांस मार रहा हूँ, और लड़के की फैमिली को लड़की से। गुड मॉर्निंग अंकल, मैं अनन्या, क्रिश की फ्रेंड। लड़के के फैमिली को लड़की की फैमिली से प्यार होना चाहिए और लड़की की फैमिली को लड़की की फैमिली से। आपको तो यकीन ही नहीं होगा कि आपकी देखो शादी दो परिवार, दो खानदान के बीच नहीं, सिर्फ दो इंसान के बीच होता है. One key challenge to healthy intimate relationships, I mean healthy marriages in the Indian context, because in the Indian context we mostly have caste, religion, finance, khandan approved weddings and not exactly relationships mostly. But anyway, one fundamental challenge to developing, nurturing healthy relationships, healthy marriages, is the lack of personal space, the lack of even this concept of personal space and independent individual identity in the social context, especially when it comes to choosing a partner in life. And yes, there is a flip side to completely walking over to the other extreme, different topic, different video. Balance is key in every aspect of life. Imagine the level of complexity in all your relationships if the entire khandan gets involved in such an enmeshed relationship dynamic. Every single time you have a difference of opinion in every decision that you have to take. If you decide every shared experience, every discussion, every mutual decision based on family poll and phone a khandan ke izzatdar whoever helpline instead of your own mind and soul in all your relationships, would any of your friendships survive? Would you have a job? How long would you have a job in any organization whatsoever? If you went to business, would you ever get that first client by this checklist? Would your sibling and cousin relationship survive? Could you have such a loving relationship with your grandparents by these standards? Would your parent-child relationship survive the test? Why on earth then would you want your entire khandan stamp of approval on the one most intimate relationship that you intentionally choose for yourself in life? Why don't we understand that marriage is not an extension of our existing family, but the foundation, the building block of a completely new family that we intentionally decide to build on our own terms, based on our values, based on our personal negotiables and non-negotiables. Intimate relationship is not the family's success trophy, nor the diamond-plated status certificate. Weddings are not khandan ki izzat. Your intimate relationship is not a community project, not the choice of staycation for the annual family trip, and most definitely not the gajar ka halwa versus ice cream debate every winter night. Your partner does not need to be approved by one and all in your contact list, and your partner most definitely does not need to perfectly fit into every single mold of the child-in-law, the sibling-in-law, the A to Z in-law. Your partner only needs to flawsomely fit into one and only one role. And that is being your partner in love and life. शादी दो परिवार के बीच नहीं, दो खानदान के बीच नहीं, सिर्फ दो इंसान के बीच होती है. बाकी सारे रिश्ते अपने अपने जगह बस रिश्ते होते हैं, अपनी शादी का हिस्सा नहीं. हाँ, हर एक रिश्ते की अपनी एक इज्जत होती है, अपनी एक पहचान होती है, अपना एक दायरा होता है, और हर एक रिश्ते के डूज एंड डोंट्स, नेगोशिएबल्स, नॉन नेगोशिएबल्स, बाउंड्रीज डिसाइड करने का राइट सिर्फ और सिर्फ उस रिश्ते में इन्वॉल्व इंसान के ही होता है, और किसी के नहीं. तो अगर फेरे सिर्फ दो इंसान ले रहे हैं, तो उस रिश्ते की पहचान, उस रिश्ते के बाउंड्रीज, डूज एंड डोंट्स, नेगोशिएबल्स, नॉन नेगोशिएबल्स, सब कुछ डिसाइड करने का हक भी सिर्फ और सिर्फ उस दो इंसान की ही है, और किसी की नहीं. शादी दो खानदान, दो परिवार के बीच नहीं, सिर्फ दो इंसान के बीच होता है. Feel free to change my mind on this.